to where she completes her journey into the Bay of Bengal, nourishing millions and hundreds of millions of lives along her way. Here is our first song. It's called Ganga. त्रिपथगा दिव्या शीततोया शैवला Thank you so much. How many of us fell in love with the river Ganga all over again after that song? Thank you so much. Now there's a very important phrase in India. I'm going to say the first half and y'all are going to shout out the second half. Are you ready? Jai Jawan? Louder. Jai Jawan? So we've praise to the soldier, praise to the farmer. We've got tremendous respect for our armed forces. We've performed for our armed forces multiple times. And we've got tremendous respect for our farmers because they ensure that we do not go hungry. So what we did was that we collaborated with the real working tribal farmers of India because they've got amazing indigenous knowledge on agriculture. They're experts at what they do. But more importantly for us,
They've got songs that have been passed down from generation to generation. Some of these songs are over 3,000 years old. So we collaborated with some such singing tribal farmers, and we collaborated on a song with them. And you'll see them collaborating with us on the big screen behind you. Our next song is called Jai Kisan. Sudhir on vocals, Wari Jashri on flute and vocals, BC Manjunath on percussion. Should I introduce the next guests who are going to come? Oh, no, I'm going to do that. The honor is all mine. Anybody wants to guess who's going to come up next? It's pretty obvious by these instruments over here. Yeah. So I've got the. Gives it away, doesn't it? So I'm going to take this incredible honor. I've got the incredible honor of introducing two of the best, two of the greatest musicians, two of the most humblest, two of the most skilled musicians that we have in the new generation. And if I may say so, two of the best looking musicians of the new generation. Amaan and Ayaan, please come up on stage and take over the stage. Come on, a bigger round of applause for Amaan and Ayaan. Namaskar and a very good evening to all of you. Good afternoon actually to all of you. Such an honor and a pleasure to be here. And thank you, Ricky Bhai, for those very, very kind words. We'll present a short piece
as a celebration on the auspicious day of Ram Navami today. So we'll all present a celebration for Ram Navami together. Thank you so much.
So I think since we're all here together, we'll collectively play some piece together, and that's the very important nature of music, where we don't need to communicate verbally, but musically we'll be all having a conversation on stage. Fantastic, and the honor is all mine. First time ever collaborating with these two musical legends. A big round of applause to them, come on. So this is the composition from my 2015 Grammy Award-winning album. This song is called Longing. छोटी बतिया बनाए बल मारे तोर नैना चित
So, we've come to the end now, and I just wanted to say that India as a country is much more than just human beings. In fact, we human beings have been here for 3 lakh years. Our forests and wildlife have been here for 3,000 lakh years. No comparison between the two. So our sustainability is defined by our forests and wildlife, our beauty is defined by our forests and wildlife, and without protecting healthy ecosystems and conserving our forests and wildlife, we as human beings will not exist. So we created an instrumental version of the most beautiful song ever in the history of our planet, the Indian National Anthem. And for this version of the Indian National Anthem, we decided to dedicate it to the true inhabitants of India, the forests and wildlife. So we would please indulge us, if you are able to, please stand up in respect for the forests and wildlife of our country. Let's please stand up for the Indian National Anthem. Big round of applause, ladies and gentlemen. Please. Amaan Ali, Ayaan Ali, they have been phenomenal, amazing talents. Thank you so much. Ricky Kej and his entire ensemble. Please put your hands together. You can be louder, more generous, ladies and gentlemen. Thank you. I'm going to request the artists to please come down from the stage. We'll clear the stage before we have our conversation. The conversation is around strengthening cultural roots, but as they are, see, one thing they do not allow anybody to touch is their sarod. And we all know why. So with a lot of respect and a lot of care, I'm going to request them to please keep that there. But where is, अरे हमारे भैया जी कहाँ हैं? आइए आइए. इससे पहले कि हम करें, हमारे भैया जी, उनका नाम प्रतीक त्रिवेदी है. भैया जी मत करो भाई. नहीं, देखिए सब आपको भैया जी के नाम से ही जानते हैं. पता है आपको, बताएं प्रतीक, हम बीच में अभी चुनाव के दौरान प्रवास पे गए थे जी. तो उस वक्त मैंने कहा आप कहाँ काम, मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ काम करते हैं जी. तो मैंने बोला कि मैं न्यूज़ 18 में काम करता हूँ. बोला भैया जी वाले चैनल पे. तो ये जो भैया जी हैं, ये हमारे कुछ रियल हीरोज से अब बात करने वाले हैं. तो माइक भी आपका, ऑडियंस भी आपकी, रियल हीरोज भी आपके. थैंक यू सो मच. और जब मैं आपके बीच हूं तो मुझे लगता है कि मुझे आपके बीच में ही होना चाहिए. और जब मैं आपके बीच में हूं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए आप भी सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं. और उसका इशारा आप भी समझें. प्लीज प्लीज. थैंक यू सो मच. मुझे इशारा किया गया रियल हीरोज से बात करने के लिए. ऑफ कोर्स मैंने वहीं तक जाऊंगा, वहीं तक उनसे बात करूंगा. लेकिन मैं और भी बहुत सारे लोग देख रहा हूं जिनसे मुझे मुखातिब होना चाहिए, या वो कल से इंतजार कर रहे थे कि काश एक बार मुझसे भी तो पूछा होता कि मैं क्या सोच रहा हूं. जरूर मैं पूछने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा. जब तक स्टेज क्लियर होगा, ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक हूं. आप हो भी नहीं सकते फिल इन द ब्लैंक. और थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करूंगा. मेरा सेशन भी है बीच में, तब मैं आऊंगा आपके बीच में. लेकिन अभी तो मैं आपके बीच में हूं और मैं आपसे बात करूंगा. सर मैं आपका नाम जाना, मैं यूं ही आ गया, बस मैं कोई भूमिका नहीं बनाता. बड़ा अनौपचारिक बात. मैं जानना चाहता हूं आपका नाम. वैभव मित्तल. वैभव जी, वैभव जी कल आप आए थे? बिल्कुल. कल ज्यादा अच्छा लग रहा था या आज ज्यादा अच्छा लग रहा है? कंपेयर करना गलत होगा. कल का अपनी यूनिकनेस थी, आज की अपनी यूनिक. क्या बात है. मैं जानता हूं ये इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या बिजनेसमैन होंगे. सर आप बताइए. नौकरी पेशा आदमी. क्या बात है. बैलेंस. सलाम वालेकुम चचा.
मैंने कल आपको देखा था और मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई। और मुझे लगा कि जब आपको अवार्ड मिल रहा था रियल हीरोज का, तो मैं आपको देख रहा था। मैं जरूर आपसे थोड़ी 2 बात 4 बात करना चाहूँगा, जरूर करना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे एक टीचर के नाते, एक समाज में एक रोशनी दिखाने के नाते, कुछ बोलना चाहेंगे? मन में है कुछ कहा जाए तो लोगों के बीच में बात जाए। जी, नहीं कहना चाहेंगे? वाह क्या बात है। क्यों नहीं कहना चाहेंगे, इस सवाल को मैं नहीं पूछूंगा, ये मैं आप पे ही छोड़ता हूं। लेकिन जो रियल हीरोज बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करना, आपका नाम जानना चाहता हूं मैं। जी, या तो मैं पहली बार टेलीविजन पे बोल रहा हूं, कैमरे पे बोल रहा हूं, या आप पहली बार टेलीविजन या कैमरे पे? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, हाथ उठाइए जो मैं आप तक आ सकूं और आप तक पहुंच सकूं। ओ, 2 लोग मिले मुझे, एक वो कोने पे, एक वो और एक वो। जी, मैं आया आपके पास। जी, नाम जानना चाहता हूं आपका। जी, मैं सुलेखा टुडू। सुलेखा, मैं मिस कर गया, मैं आपका अवार्ड नहीं जान पाया किस कैटेगरी में है, और आपने शायद आपको मिला है। जी, पर्यावरण पे। यस सर, पर्यावरण के हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं कि अभी हम लोग का जो पर्यावरण है वो ज़्यादा ही प्रदूषित हो रहा है। हम लोग ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं, तो हम लोग तो वहाँ के जो मतलब जो जंगली मतलब जंगल में जो रहने वाले पशु पक्षी है, वो लोग का हम लोग घर भी तोड़ रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो लोग के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है। अरे हाय, मुझे मन लग रहा है कि एक बार सैल्यूट कर दें। इतनी निश्चलता और इतनी ईमानदारी वाले आंखें और नजर बहुत कम मिलती है। ये है रियल हीरो। लेकिन सच तो ये है कि हर आदमी अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, और वो बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, और वो ये भी चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात कहें और वहां तक पहुंचे। आप करना चाहेंगी बात? जी, नहीं करना चाहेगा। मैं तो देख रहा था कि शायद मैं ही अनजाना आ गया यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव। सौम्या श्रीवास्तव, क्या किस फील्ड से हैं आप? सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। तो अब जब यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो ऐसे जब कॉन्क्लेव्स में या यहाँ जब आए राइजिंग इंडिया में, तो आपको बैठ के और यहाँ पे आके और कौन सी चीज ऐसी लगती कि नहीं ये चीज कमी है इसमें, ये एक चीज और जोड़ी जाती तो ये और अच्छा हो सकता था? सर, अपने आप में वैसे इवेंट बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एवरीवेयर। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पैनलिस्ट है वो थोड़ा और आना चाहिए। बिकॉज वी थिंक कि हमको लगता है कि यहाँ पे पैनल्स पे जो बैठे हैं थोड़े से नीश लोग हैं, हम थोड़े से अपने आप को अपने आप को दबा के रखते हैं, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, शायद हम गलत। आप बिल्कुल सही शख्स के सामने खड़े हैं और बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं। मैं मालूम है एक बोलेगा तो दूसरा तो जरूर बोलेगा। मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मेरा जो काम है, मेरी जो फील्ड है, जो पिछले 26 साल से मैं टेलीविजन में काम कर रहा हूं, मैं इसी पे काम करता हूं। सिर्फ कैसे कनेक्ट यहां से वहां, और सारी दुनिया चाहती है यही कि जो मार्केट में उनको कंज्यूमर चाहिए, लेकिन वो बने कैसे, वो रास्ता कैसे खुले, ये इसी पे काम है मेरा। और मैं आपके पास बड़ी ईमानदारी के साथ, आप उस कोने से किसी ने हाथ उठाया था, ओहो मैं आया आपके पास, इधर से कुछ बोलना चाह रही थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरे पास आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि बीच में एक ये है डिवाइड। आगे जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप अवॉर्डी में? हाँ, क्या बात है। तो क्या किस काम में, किस क्षेत्र में काम कर रही हैं आप? मैं पानी के संरक्षण में काम कर रही हूँ कि जो हमारी ज़मीन का जल स्तर आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने ही देखते देखते और जो हमारा जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं महिलाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसी शहर में पिछले 26 साल पहले बस गया आके इस दिल्ली से, और दिल्ली तो दिल्ली है। और मैं एक बात बड़ी साफ गोई के साथ कह सकता हूं, जिस जगह मैं रहता हूं ठीक ठाक कॉलोनी है वो, लेकिन आप पानी बचाने में लगे हैं। मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं हुजूर, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, बस इसी बात पे खत्म कर दूंगा। और वहां पे लोग रोज सुबह उठते हैं और अपनी कार जो है उसी पानी से साफ करते हैं, और आप पानी बचाने में, ये दिल्ली की हकीकत है। और ये सब जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात ये है कि हो नहीं पाती। जी मैं आ गया भैया जी। वार्तालाप में बहुत मजेदार है। मैं तो ऐसा लगा कि मालूम आपकी मजबूरी है, पर, आपको भी अपनी जी देखिए, घड़ी इशारा कर रही है कि हमें इस
गाड़ी को आगे बढ़ाना है बिल्कुल, न्यूज़ गाड़ी आप 18 आगे राइजिंग बढ़ाइए इंडिया के। और मैं आपकी गाड़ी में पीछे डिब्बा बन जाऊंगा। जी, एक बात को सेंटेंस पूरा कर लेना जी। हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग पानी के लिए इस प्रकार से धोते हैं, उन्हें महिलाओं की तरह पानी को सर पर मटकों को रख के भरना नहीं पड़ता। अगर उन्हें भरना पड़ता तो वो इस तरीके से गाड़ियों को नहीं धोते। क्या बात है। अब इसके बाद तो आप सेशन करिए, मेरा काम पूरा। इससे ज्यादा बढ़िया सेंटेंस कोई हो ही नहीं जोरदार सकता। तालियां जो Thank you हमारे so रियल much. हीरोज हैं Thank उनके you, लिए salute, भी salute. और प्रतीक त्रिवेदी के लिए भी। So much sir, thank you, thank you. देखिए, आप जो करते हैं ना वो आपकी कला है। आप जिस काम में माहिर हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो प्रतीक त्रिवेदी इज वेरी यूनिक एंड इज एन एसेट टू अस हियर इन द न्यूज़ 18 इंडिया फैमिली। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रतीक प्लीज। थैंक यू सो मच प्रतीक। Now, ladies and gentlemen, let's go back and ask this question to ourselves. How many of us are seriously coding culture into the next generation? If you want a Shresht Bharat, a Saksham Bharat, a Sudrid Bharat, a Samridh Bharat, can it be without us having our cultural roots? Nations that have shunned their cultural roots have suffered. Nations that have ignored their virasat have suffered. We have only our virasat to celebrate. How many of us are actually serious about it? Today, we have the current generation, a legend in herself, all of them on stage. You've seen some of them perform. You'll hear a lot of them talk now and their views on how can we strengthen our cultural roots. And with your kind permission, I'm going to first request Sonal Mansingh ji ka hai na? To aaiye, the youngest to get Padma Bhushan, Padma Vibhushan, a legend in Bharatnatyam and Odissi, a member of parliament. She needs no introduction. The one and only Sonal Mansingh ji. You can be a little more generous with your applause, ladies and gentlemen. Her achievements are phenomenal. जितनी हमारा करियर यही है, वो करियर हो गया, लेकिन उस करियर में मैंने बहुत कुछ सीखा. बाणगंगा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, these are festivals where first time I met Abba Sahab. And I was very young at that time, and I was a huge fan of his. So I asked him, कि sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोले, जो काम करो शिद्दत से करो. So that is something which I have learned from your guru and your father. So I have to start there. But then she's somebody who's not only his peer, but she knows and she's transcended those bastions which nobody else has. So let's ask Sonal Mansingh ji to please start the conversation and tell us what do we need to do as a country to strengthen our cultural roots. What do we need to do as a country to strengthen our cultural roots? Where should I begin? So, at the beginning, I want to offer my respectful namaskars, namaste to all of you and to TV18. It's rare that I get invited. The dancing Mansingh, as I was called, in Japan Expo 70. What needs to be done for culture? In a way, not much, because the word culture is a bit heavy now, whereas when I was growing up, it was understood. In my school, in our daily life, and interaction with artists, interaction with friends, families, society, where festivals and so many beautiful things were celebrated as part of life. Culture actually, to me, means, Anand, refinement. Because it's like mud, which is shaped into a pot, and then it is put in the bhatti. Tapne se culture banta hai. Tapasya, sadhana. But in daily life, that kind of refinement of ideas, of thoughts, of behavior, of interactions, it all spells out culture. Now it has become dance and music, majorly, but it is much more. And dance and music
anyway, performing arts of India are the traditions which have kept the soul of Bharat alive. The monuments go, they fall down, they burn out. Ji. Everything is transitory, but dance, music reflect generational ideas of Satyam, Shivam, Sundaram. Sundaram. And that to me is culture, apart from thousand other things. So it's a very big point, Anand. You need to have a long one-day discussion about it. We will. We thought we will start with a small conversation, and that's why, see, the performance itself left us wanting for more. We wanted to listen more to Ricky, more to listen to Ayaan and Amaan. So, मैं आपसे जानना चाहूँगा to take this forward. Have you ever thought who after us? Abba Sahab had two of you. He coached you. He brought you up, and he trained you. Have you ever thought, ki, are there too many people wanting to play the sarod today? Are there too many who want to learn Odissi? Are there too many who want to use Indian sounds, Indian music, and take it to the world? How many of them are there? And is it all going to be there till 2047? Firstly, adab and namaskar to all of you, respected elders and friends, to all the people here. You know, I used to ask my father, I keep asking him, I said, Abba, bahut zyada, there's too much of sarod, too much of sitar, too much happening. Competition has gone up. What should I do? He said, your biggest competitor is not somebody who's better than you, but somebody who's more humble than you. Wow. So culture mein wo attitude is very important. You know, what ma'am was just mentioning, jo parvarish hai, background, you have to be humble, not arrogant. So there are many, many sarod players, sitar players, Santoor, Flute, much talented than Ayaan and me. Firstly, I like to admit, not being modest, but the truth is, if we were not born to Ustad Amjad Ali Khan Sahab, whatever Ayaan bhai and I have achieved chota mota, isko bhi aur 25-30 saal lag jate hain. So the gratitude, you know, it should be the attitude, basically. There are many young musicians, but I would request the corporate houses, the way they're taking care of monuments now, they're preserving monuments and all, they should encourage the younger generation. Otherwise, like China, we'll end up having an old population of musicians. So the youngsters have to be promoted. We try and promote a lot of, I mean, I can't promote sarod players, to be honest. I don't want to. Yeah. But I promote a lot of tabla players, percussionists and all, who are much younger than me. I think we are very blessed in India that culture, music, the fine arts, it's all part of our spiritual journey as well. That's most important because the very evolution, I think, of the fine arts, you know, leaned with spirituality. Yes. And that's why I think for us, we were very fortunate to be born in a family where music was the air we were breathing. So that's why we didn't look at it as a profession. We looked at it as a passion. It was a way of life. We didn't know better. And now, to answer your question, I mean, I don't think we have any dearth of talent. I think even the classical scene or the fine arts in general has also adapted to, you know, the changing times. It's reinvented itself with social media coming in, all that happening. There's so much content of all the great masters so easily available. Which, you know, hum log ek recording used to change our lives. One recording of that concert, वो सुन के मुझे लगा गाना बजाना हो तो ऐसा हो. But आप आज एक राग लिखिए या any performance of any artist, you know, you'll get thousands of hours of recording. So that's why the quality of musicians and performing artists now, it's brilliant because they're getting the ready-made research so easily available over a click of a button. But having said that, it's a long journey. I think you're a student till the last day you walk this planet. Yeah. And my father says he's still a student, so keeping that in mind, I'm yet to be delivered. Right. Ricky, just final quick word from you, because you use a lot of Western instruments. You are also playing with a lot of Indian sounds. You're using ragas, themes. But do you see a shift away from Indian music or a return back to? So yeah, so my music is primarily Indian, but of course, like, you know, with a lot of fusion elements. So I would like to respond to your question, I'd like to say that the most important thing is breaking cultural barriers. Because if you look at, let's take an example of Bollywood music.
when a Bollywood composer or a Bollywood singer goes abroad and performs, let's say in USA or in Europe or Russia or wherever, the thing is that they manage to fill up complete stadiums, they manage to fill up complete auditoriums, but the people who show up for those concerts, 99% of the audience is the Indian diaspora, because they're not actually breaking cultural barriers. There are a few exceptions, but 99% of the audiences are usually the Indian diaspora. Whereas if you look at the Indian classical musicians, like Pandit Ravi Shankar, you look at Ustad Amjad Ali Khan, you look at Pandit Vishnu Mohan Bhatt, Pandit Hariprasad Chaurasia, all these amazing musicians, they are the ones who have actually broken cultural barriers. Because I remember when I was 19 years old, I watched a concert of Pandit Ravi Shankar in the Bay Area in San Francisco. Right. And what shocked me about that concert was that the demographic of the people in the audience was very representative of the demographic of the people within that city. So they had truly broken cultural barriers, and I think that's what's important. And the younger generation needs to be encouraged that if you are looking, if you're craving for international recognition, then it's very important that to stick to your roots, to dig deep into your roots, figure out what is it that makes you uniquely Indian, and that is what will give you recognition all over the world, because you'll be true to yourself and true to your art. Right, very well said. Big round of applause to all our panelists. And you said we need to celebrate the next generation, and I'm going to request Sonal Mansingh ji to felicitate one of our real heroes in the field of arts, culture and heritage. I just want to play out the AV. Have a look at this AV and the story of this amazing talent. The first winner in this category, presenting the first winner in this category. Sunita Chingran Sharma, the woman with the golden voice, creates magic through her music. Born in a family of musicians, she has carried forward an age-old legacy, enthralling her listeners in the process. Renowned for her proficiency in Samaveda and the Ragas, Chingran is a Hossaini Brahmin. She is a beacon representing the essence of India. तो मैं न्यूज़ 18 की बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। और एक बात और है, क्योंकि मेरी वाबस्तगी लखनऊ की सरजमीन से है और वहाँ पर मैंने बचपन से, मैं स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। तानसेन जी बैजू बावरा के गुरु जो रहे हैं मेरे परनाना हैं, तो संगीत मुझे विरासत में मिला है। थैंक यू। और मैंने 20-25 गुरुओं से, घरानेदार गुरुओं से अलग अलग मैंने तालीम ली है। मैं मुख्तसर सा थोड़ा सा परिचय अपना, और सबसे आखिरी गुरु जो मेरी रही हैं वो बेगम अख्तर साहिबा, मलका गज़ल, मलका ठुमरी रही हैं। लेकिन साल भर तक शायद मैं सीख पाई, लेकिन इससे क्या, समंदर की एक बूंद ही काफ़ी होती है। और उस्ताद नसीर अहमद खान साहब आपके दिल्ली तानरस खां के घराने के मैंने ख़याल की तालीम ली। उस्ताद बशीर खान साहब सारंगी नवाज थे, किराने घराने की गायकी के सिद्धस्त कलाकार थे। उस अफजल हुसैन नगीना, ऐसे बनारस के पंडित हरिशंकर मिश्रा जी। तो एक कलाकार जो है वो समंदर होता है, और थोड़ा सा इतना लोगों ने टाइम लिया। मैं वहाँ मचल रही थी जैसे किसी शराबी को मैं कदे में गया और कुछ ना मिले तो क्या हाल होता है मियाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। सुनीता जी, कितना जुल्म किया है, पीछे रहिए। नहीं, मुझे आपसे आग्रह है, मेरे पास समय बहुत कल्प है। मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि जी सिर्फ मैं आपका 1 मिनट लूंगी जी, क्योंकि ये कहा है कि कलाकार खुद कलाकार साधना कर सकता है, तपस्या कर सकता है, लेकिन उसको उठाने वाले एक वसीला होता है। वसीला ज़रूरी है। तो एक शेर कहा है कि शम्मा बेकार है, दाद चाहूँगी ऐसे खाली ना बैठिएगा, कि शम्मा बेकार है जब उसमें उजाला ना हुआ, और हुस्न किस काम का अगर कोई चाहने वाला ना होगा। दिल्ली दिल वालों की है,
दिल क्या चीज है, दिल क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। अरे मियाँ तुम चाहो तो चाहने वालों की तरह। और एक उस्ताद बरकत अली खान साहब की सुनीता जी मुझे आपको टोकना पड़ेगा क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं। सुनीता जी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत अनुरोध करता हूँ आपसे। आजकल मोदी जी का जमाना है और पहले इंसाफ होता है। मोदी जी का जमाना है, इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद तो हम लें भैया, कुछ तो गुनगुना लेने, तो गूंगे बन के तो आए नहीं। तो आप लोगों की इजाजत है। एक उस्ताद बशीर, नहीं नहीं नहीं, आप बैठे, आप लोग बैठे, आप क्यों खड़े हैं? मान ढिठाई के लिए क्षमा चाहती हूँ। श्रुति कण खटका मुर्की गिटकरी जमजमा, ये गहने हैं, ऑर्नामेंट्स हैं। एरी फगुनवा में हो रे खेल रे कन्हैया गो, फगुनवा में हो रे खेल रे फगुनवा में होरी खेल रे कन्हैया, फगुनवा में होरी खेल रे कन्हैया, फगुनवा में होरी। सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, सुनीता जी, आपको अगर मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, नहीं नहीं सुनीता जी देखिए, यहाँ एक लाइव पटल है, मंच है, आपको इसका भी आदर करना होगा जितना हम आपका आदर कर रहे हैं। प्लीज आइए, 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 ये आपका, आइए, 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 प्लीज, नहीं प्लीज आइए, ना प्लीज आइए। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sunita Jignesh Sharma ji and to all our panelists. Thank you very, very much. Yeah, please, we have to. We're seriously running behind schedule, and I have to request all our guests to please vacate the stage. Thank you very much. We're ready for our next session. Ladies and gentlemen, please put your hands together for your host, Chandra Shrikant. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be your host for the next few sessions.